everyone, today we will be learning a new method to solve a transcendental equation, which is nothing but Newton-Raphson method. It is very similar to what we have seen. इसके पहले भी हमने देखी है कि रेगुलर फॉल्स मेथड, जिसको दूसरा भी नाम है कि फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोला जाता है, दैट वी हैव सीन इट. नाउ वी विल बी लर्निंग दिस न्यूटन-रैप्सन मेथड. ये थोड़े कंपैरेटिवली रेगुलर फॉल्स मेथड से थोड़ा फास्टर है इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स और द वैल्यूज ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो that approximation is that value which we get it's little faster. So let's start with looking at the Newton-Raphson method. Here as we discussed, what is transcendental function is, it is the function which will be included with the trigonometric function or some other functions like exponential or something like that. So here first of all f of x will be given in that form. Then like how we did with regular false method, same thing we will be doing. We will be keep substituting values like 0, 1, 2, and we will see that whether these values where the change of sign comes, that two values we will be taking as a range, and the root of the given function should be lying in between that range. So first step is always to find the range between which the root of the given function must be lying. So that is first important thing to do it, or the step which we have to do it, and we have to keep placing the values, substituting the values. जैसे कि 0, 1, 2 है, जो भी substitution करते हैं, subsequent substitution में हमें change of sign आना चाहिए, so that we can get that interval to find the more accurate roots. Now there is one formula here which we will be using like xn plus 1, which is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn. So xn की जो भी value हम ले लेंगे वो function में हमें we have to substitute and find the value of f of xn. F dash of xn is nothing but the derivative, first order derivative, we have to take it. And that we have to substitute in that formula. So to get the value, here is the one question which I have taken for which is based on Newton-Raphson method. Find approximate value of root 28 up to 3 decimal places. So x की value root 28 दी हुई है. I just rearranged it so that I should get the f of x in terms of x. तो उसको रीअरेंज करने के बाद मुझे ये आ चुका है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू 0. सो दिस इज़ आवर f ऑफ x. नाउ इसको सिंस इन द फॉर्मूला वी नीड f डैश ऑफ x ऑल्सो, सो आई जस्ट सिंपली डिफरेंशिएटेड दैट विथ रिस्पेक्ट टू x टू गेट f डैश ऑफ x. नाउ तो मेरा f डैश ऑफ x आ गया 2x. So now first thing is I have to find the range of the roots like of given function where it should be lying. So मुझे सबसे पहले उसको मैं substitution करनी होगी, जैसे कि 1, 2, 3 I have we have to check whether we get the change of sign. तो मैं जैसे ही f in given function मैं 5x की if I replace with x with 5 I am getting negative number, and in same way अगर मैं 6 रखती हूँ x की जगह फंक्शन में तो मुझे मिल जाती है पॉजिटिव वैल्यू. सो एक नेगेटिव वैल्यू मुझे मिल गई, ये f ऑफ 6 की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई. सो दैट्स रीज़न व्हाट वी कैन से द रूट ऑफ गिवन फंक्शन मस्ट बी इन द इंटरवल ऑफ 5 to 6. Before that, if I will keep trying the numbers, if I replace x with 1, 2, 3, 4, then change of sign will not be occurring. So that's the reason we have not taken that range. Okay, now अभी range तो हमें पता चल चुकी है, 5 to 6 ये range पता चल चुकी है. Now we have to start with initial approximation. 5 to 6 के बीच में कहाँ पे रूट है, तो हमें वो approximate value हमें consider करनी है. इसके दोनों 5 to 6 में वो कहाँ पे भी लाई हो सकती है, तो हमें assume करना है उसकी approximate value. जैसे कि मैंने यहाँ पे x0 की वैल्यू ले ली है 5.5, that is our
approximate value, that's assumption. Okay, so we have to start with that, and we have to go that will be the value of x0 for our first iteration or for first approximation. The formula which is we will be using for Newton-Raphson method, this I have written over here. Before we go in detail for more solution, I want to discuss this method for so that it will be more clear. So let's say this is I have plotted the given function in terms of graph, like जैसे ये this is just graph, I have put it on the x and y axis. So here, like what as the assumption we have did it for initial approximation, that value if you remember we have considered is as a 5.5. यहाँ पे जो हमने consider की है value, because the given root must be lying in between 5 and 6. जो 5.5 consider किया है, जो point आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो that's our initial approximation. तो यहाँ से हम एक perpendicular draw करेंगे which will be cutting this graph here. So from there we will be drawing the tangent. Tangent हम यहाँ पे draw करेंगे इस point से. It should be just touching point over here, and we will see that where it is cutting the x-axis, that will be our next approximation. From there again we will be drawing a perpendicular which is touching to the curve. So वहाँ जहाँ पे भी वो कट करेगी ग्राफ को, वहाँ पे then again we will be drawing the one more tangent over there, and that's how what it's going to happen here. जैसे जैसे tangent हम निकालेंगे, that's how we approximation this will be coming close to the actual value of the root. जो it is going towards the value of the actual root. This is how the actual Newton-Raphson method works. So same thing we will be doing mathematically here. जैसे कि 5.5 हमने पहले ले लिया, that was our initial approximation, x0 के value हमने ले लिया, तो then I will substitute it here in the given formula. So xn plus 1, हम x की 0 की value substitute कर रहे हैं, तो x1 की value हमें मिलने वाली है यहाँ पे, and then x0 value whatever we have taken, that we will be getting. Formula जैसे in terms of x0 I have written the same formula I have written here in terms of x1 and x0, nothing else, and in that we will be substituting value. यहाँ पे f of 5.5 की value मैंने निकाली है क्योंकि that's what we have to keep it here. f of x0 की value, x0 हमारा 5.5 है, so इसलिए f of 5.5 just after keeping the 5.5 in the given function I found out which is 2.25. Similarly f dash of x हमने निकाला था यहाँ पे, जो हमें मिला था 2x, f dash of x was our 2x, so इसकी 2 into 5.5 if you do it we get it 11, so this is nothing but 11. Given function से ये value हमें मिल जाती है. Now I will just put it these values in the formula, the one which I received here for f dash of x0 and f of x0. After calculation I will get this 5.2955. So if you see that this is the value of x1 which we will be using for the next second approximation. So the way that root is going close to the accurate value. So in the second approximation now I will be using the value which I found here for x1. To find the x2's value I have used this x1 value which I have taken from the previous step or previous approximation, first approximation I would say. Now again f of x1 I need it here. F of x1 like by keeping the value of 5.29 in the given function जो भी था हमारा x square minus 28 जो function था हमारा x square minus 28, इसमें हम x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5.2955, इसका ब्रैकेट स्क्वायर 28 माइनस 28, तो इसके बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगी ये यहाँ पे मैंने लिख दी है 0.0423. f डैश ऑफ x था हमारा
2x था, इसमें अब देन अगेन आई हैव प्लेस द वैल्यू 5.2955. सो इसके बाद मुझे जो मिलती है वैल्यू आई हैव केप्ट इट हियर, दैट इज़ नथिंग बट f डैश ऑफ 5.2955. आफ्टर दिस आई जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x2. तो मैंने ये इक्वेशन में जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है इसकी वैल्यू. दिस इज़ नथिंग बट आवर x1, दिस इज़ f डैश ऑफ x1 अपॉन f of x1 अपॉन f डैश ऑफ x1. सो ये जो f of 5.29 जो वैल्यू मिली थी ये न्यूमरेटर हो जाएगा, f डैश ऑफ 5.2955 इट विल बिकम डिनोमिनेटर. सिंपली वी हैव टू डू द कैलकुलेशन. तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के बाद मुझे x2 की वैल्यू मिल चुकी है. अगेन इफ़ यू विल ऑब्जर्व इट द रूट इज़ गोइंग मोर क्लोजर टू द रूट. नाउ x2 की वैल्यू I am using it here so that I should get the value of x3. तो हमारा जो f of x है 28 x square minus 28 and f dash of x था 2x. इसमें मैंने I have substituted the value of x2 which is 5.2915 bracket square minus 28. So after calculation I will get here minus 0.003 which I have kept it over there. Similarly f dash of x, इसमें मैंने रख दी है x2 की वैल्यू 5.2915. आफ्टर दैट आई विल गेट 10.583. ये यहाँ पे मैंने यूज़ की हुई है. सेम थिंग वी विल बी कीप डूइंग. x2's वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट की हुई है. नाउ f of x2 मीन्स f of 5.2915 ये न्यूमरेटर मैंने लग दी है. f डैश ऑफ x2 जो मैंने यहाँ पे निकाली है f डैश ऑफ 5.2915 that I have kept it in the denominator. So that's how we found the value 5.2915. Now if you will observe one thing, यहाँ पे जो हमें x2 की वैल्यू मिल चुकी है 5.2915 और यहाँ पे जो x3 की वैल्यू मिल चुकी है 5.2915. It's like exact like the same value we are getting. So if you see this like value which we got from received from the previous approximation and the next approximation, अगर वो same ही आती है that means we got the required root of the given function and we don't have to go ahead for more approximations. तो हमें third approximation में ही इसका आंसर रूट का आंसर हमें मिल चुका है which is 5.29. This is how we found the root of given function. So यहाँ पे सिर्फ आपको याद जो रखना है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि हमने पहले पढ़ा है. आफ्टर दैट इट्स फर्स्ट थिंग इज़ फाइंडिंग वेयर द रूट इज़ लाइंग. द रेंज मतलब इंटरवल जहाँ पे रूट लाई हो सकता है वो दैट्स फर्स्ट थिंग फाइंडिंग आउट. And initial approximation you have to take it which should be within the interval which we have considered. और उसके बाद जो है तो वो प्रीवियस स्टेप से प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन की जो भी वैल्यू आपको x1 की x की मिल जाती है दैट्स यू हैव टू यूज़ इट इन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन सो दैट यू विल बी गेटिंग द फर्दर वैल्यूज़. एंड जैसे ही आपका दोनों x की वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन एंड नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जहाँ पे भी आपको सेम मिल जाती है वहाँ पे आपको आपका रिजल्ट आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ गिवन फंक्शन आपको मिल चुका है. सो दिस इज़ न्यूटन-रैप्सन मेथड. इफ़ यू कंपेयर विथ रेगुलर फाल्सी मेथड इट इज़ मच फास्टर. you get the result, and comparatively if you look at that calculation part also it's little bit less also. So depending on what is been asked in your exam you have to use the same to find the required result or root of the given equation. This is what about Newton-Raphson method. In the next video we will be learning more methods which are iterative methods also to find the or to solve the equations. Thank you.